Hare Krishna, everyone. I welcome all of you. Today we are going to discuss about very controversial topic. Who is supreme? For that matter, if we discuss about Hindu religion in our culture, there is so much of confusion that who is supreme, whether Krishna is supreme, Brahma is supreme, Shiva is supreme, or Durga is supreme. Everybody is giving their own philosophy very logically. And when we hear them, we get attracted by their philosophy. Yes, if suppose you happen to visit any temple where Mother Durga is being worshipped, and the preachers you meet over there, they will very emphatically preach that how Durga is supreme, Shakti is supreme. And if suppose you happen to go in Brahma Kumari, a very big organization in India, so you will be very thoroughly get convinced that something energy is supreme. There is nothing called God or Krishna, something like that. One energy is there, Jyoti is there, and we have to meditate on that Jyoti, and finally get merged into that. And if you read Western philosophers or scholars, then they will come to the conclusion that this body, we are this body only, and this body will be amalgamated one day and it will be finished. There is nothing beyond this body. You just enjoy here in this material world as you are living, so that you enjoy in full of your extent. So like this, and if suppose you happen to visit any temple of Lord Shiva, then you will be preached about the glorious position Lord Shiva, that how Lord Shiva is supreme, referring even the scriptures. Even they will refer the scriptures also to understand, make you understand that Lord Shiva is here accepted as supreme. Then we suppose a person is there, he is visiting. Suppose a person X is there and he visiting all the temples, Brahma Kumari and Chinmay Foundation. He visited ISKCON also, where devotees started preaching that how Krishna is supreme. He visited many temples, like suppose he went to Vaishno Devi temple. About Mother Durga, he will be preached that how she is supreme. So different people are preaching different messages. In Hindu culture also, there is no unanimous understanding that who is supreme. 33 crore demigods, and they all are supreme. Their preachers are preaching like that. Ganesha's preachers, they will preach that Ganesha is supreme. Krishna preachers, they will preach Krishna is supreme. Shiva preachers, they will preach Shiva is supreme. So actually, who is supreme? What is this? Why there's so much of ambiguity there in the scripture? Ved Vyas ne kya clarity nahi ki while he was writing the scriptures, while he was compiling, so he did not give the clear understanding that who is supreme. Why so much of confusion? If you read Durga Puran, Shakti Puran, then Mother Durga is glorified, that she is supreme. If you read Shiva Puran, then Lord Shiva is supreme glorified. He is the controller, he is creator, he is doing everything. Vishnu Puran, you read, Vishnu is glorified, Vishnu is supreme. So one will get confused that what is this going on. So therefore, many times Hindus also, when they get into so much of confusion, they think that, oh, this is so Hindu culture, Hindu religion is full of confusion. There is no clarity that who is supreme, and then they become atheist. Chodo yaar. And this other religious people, they take advantage of it. Like in Christianity or in Quran, they will call Hindus, oh, you have so much of confusion in your religion. Who is supreme? You are also confused. Somebody is saying Durga, somebody is saying Kali, so many blah blah things they are preaching. But you see, in my religion, only Allah is supreme. There is no confusion. Everybody worships Allah. So, just see, here so many people are accepting Allah, and in your culture, in your religion, people are confused. So you come here, no confusion, you become Muslim. So people are getting transformed and converted into Muslims also. So like this, because of so-called religion, people are becoming atheist. People are converting their religion, becoming Christian or Muslim, because of unambiguous understanding about what is what. So let us discuss this topic very nicely. Logically, if you go by logic, you can never ever comprehend that who is supreme. You can never establish that who is supreme by logic.
लॉजिक आप अगर लगाएंगे in order to understand your the higher subject matter, then logic will fail, because we have four defects in our human being, in human body. Our senses are imperfect, our perception is more or less, it is imperfect. What you are perceiving may be correct, may not be correct. Yes or no? And whatever eating you are hearing, everything is full of faults. So our mind also very trivial mind we have got. We don't have full, extraordinary intelligence that we can understand the whole thing by our logic. It is said that tarko apratishtha shrutayo vibhinna naso muniriyasya matam na bhinnam. That tarko apratishtha, you can never ever establish who is supreme by tarka or logic. Tarko apratishtha Shrutayo vibhinna. In different scriptures, different things are explained. Shrutayam, Shruti means Vedic literature. Vibhinna means different. Tarko apratishtha, Shrutayo vibhinnam. श्रुति में भी जैसे मैंने बताया, विष्णु पुराण में कुछ और, शिव पुराण में कुछ और, दुर्गा पुराण में कुछ और, इस तरीके से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दिया गया है. तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नम नाशो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम. और मुनि जो है अलग अलग सेजेस, अलग अलग सेंटली पर्सन, दे आर सेइंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. उनके एक मुनि का मत ये है, दूसरे सेज देयर सेंटली पर्सन उनका मत अलग है, उनका ओपिनियन अलग है. हर एक मुनि का अलग अलग ओपिनियन है. And it is said that one muni means those who are very much logical, logician. Muni is not devotee. Muni, the muni, the final, the convergence of muni is devotee. When muni becomes perfect pakka, then he becomes a devotee. So muni means philosophers giving their own understanding. So a person, he will be called as muni when he differs in the philosophy from other muni. If his philosophy is matching with any other muni, then he will not be called as muni. So that muni must give a different opinion in order to become muni, in order to establish his intelligence, that I am very intelligent, just see I have given a different understanding opinion. So like this, all the munis are giving different understanding opinions. So nasav munir yasya matam na bhinnam, unke mat alag alag hain. फिर धर्म, then how to understand that? लॉजिक से भी हम नहीं समझ सकते, और स्क्रिप्चर्स में भी अलग अलग बताया गया है, मुनि भी अलग अलग बोल रहे हैं. Then what is the scope for us to understand a person like us who are so lost here in this Kali Yuga? So it is said, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनायेन गतः सुपंथा. जो धर्म का जो तत्व है, धर्मस्य तत्वम, the truth, the absolute truth is hidden, nihitam guha, in the heart of Mahajana, the great authorities. Yin gata samantha, those who are acharyas, great personalities, the tattvadarshis, those who have read the scriptures and finally ascertained, finally established that who is supreme after a lot of research and all those things, and heard from authorities, then finally concluded that who is supreme. So when we approach the Mahajanas, Mahajana means great acharya, great personalities, then we can come to the fact that who is supreme. Otherwise, we will be lost. Vedic literature is full of confusion. Why? Not because Vedavyas wanted to put us in confusion, because of that Vedic literature are divided into three parts. One section is in mode of goodness, another section is in mode of passion, another section is in mode of ignorance. So in different, because all the living entities are influenced by three modes. Somebody is predominantly mode of goodness, somebody is in mode of passion, somebody is in ignorance. So for everybody, Vedavyasa has given different literatures to raise their platform of consciousness. But unfortunately, when by ourselves we try to understand, then we get lost. Because in Tamoguna Puran, there are many scriptures who are meant only for Tamoguna people, like Shiv Purana, all these things, that is meant to Tamoguna people. There are many people who are into Rajoguna. So for them, some scriptures are given that you read that, and then from this level in Rajoguna, you shift to Sattva-guna, because Sattva-guna is the highest among all the three gunas. Then Rajoguna, then Tamoguna is the lowest. And Sattva-guna people, those who are into predominantly Sattva-guna, for them another literatures are there. So like this, Vedas, 4 Vedas, 108 Upanishads, and 18 Puranas, they're all divided according to the modes of people.
बट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझ लूंगा सारी चीजों को, मैं एक्सप्लोर करूंगा, then you will be lost, you will be confused. So actually Ved Vyas did not, you know, purposefully created this confusion कि चलो लोगों को confuse करते हैं, नहीं. He has given rightly for different people. जिस तरीके से हमारे education system में math, suppose you take mathematics, so maths में कितने सारे understanding है ना. फर्स्ट क्लास के लिए है, सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स है, फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स है, टेंथ स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स है, एंड देन ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स है. और सो हर सेक्शन के लिए अलग अलग मैथमेटिक्स का लेवल है. नाउ इफ यू ब्रिंग द मैथमेटिक्स ऑफ 12th, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और व्हाटएवर अलजेब्रा टू अ स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास, then what will happen? He will say these are all mythology, this does not exist. What is this mathematics? ऐसे थोड़ी ना होता, because he cannot understand that what is given in calculus, what is coordinate geometry, what is complex number. There is one number, complex number, imaginary number, real number plus iota. What is this iota? He cannot understand. So for him it will become so much confucius, so he will give up the education. But when we systematically present him in fifth class, present only fifth class math, 10th class explaining about 10th class. So when his consciousness is increasing, when his level, his understanding is increasing, then according to his level you explain, then he will appreciate. Yes. Otherwise, if in the fifth class you explain him about PhD maths, then he will be bewildered, he will be confused. He will not have any interest in maths. वो हमेशा मैथ्स में गधा रहेगा, छोड़ देगा मैथ पढ़ना. So just see in our education system also very systematically it is designed. आप फिफ्थ क्लास में तो फिफ्थ क्लास का ही पढ़िए. आप टेंथ में आए, now you can study 10th class. जैसे छोटा बच्चा, उसको 1 minus 5 is does not exist. 1 minus 5 does not exist. It is taught to the student of first, second standard. But when he comes to higher level, higher standard, when he is in sixth standard, seventh standard, then 1 minus 5 equals to minus 4 बताया जाएगा. अब उसको ये नहीं बताया जाएगा does not exist. It will be explained that 1 minus 5 equals to minus 4. So like this, according to the level of understanding, the knowledge is given. किस consciousness में आप हैं, हर एक living entity का एक अलग अलग consciousness है. So therefore we should never compare कि वो तो ये कर रहा है, why should I not do? No, his consciousness level is different, your consciousness level is different. So according to the level of understanding, according to the level of consciousness, different understanding is given. That is the perfect way of knowledge, giving the knowledge. Yes or no? In our education system we are practicing this, चाहे वो maths हो, चाहे physics, chemistry, whatever. In English, suppose a small student, you now start explaining about Oxford dictionary में जो सारे big vocabularies are there, then he will be frustrated, he will give up reading English. So same thing is happening in our religion, because it is not properly explained, systematically explained. जो छोटा beginner है उसको highest knowledge दे दिया, then he will be lost, he will be confused and he will become atheist. Just like if a person, a student of first standard, he is being explained about the maths of PhD, then he will be bewildered, confused, he will lose the interest in maths and he will not study the maths only. हमेशा पूरे लाइफ भर वो मैथ से डरेगा. सो वही सिचुएशन हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल में हो रहा है. हमें लगता है कि हम रिलीजन को बहुत है ना लाइटली लेके हम सोचते हैं कि हम समझ लेंगे अपने से. नो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. यू जस्ट लाइक इन एजुकेशन सिस्टम यू फील इनकम्पैटिबल. You think that I am not qualified, so I should go to a guru and approach and understand, inquire from him. तो आपको गुरु एक सिस्टम में जाते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, सिस्टमेटिकली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th, systematically you grow, and it takes so many years, and then you can see the so much tangible gain in your life. Otherwise if you do haphazardly, कभी फिफ्थ क्लास में आ गए, अगले साल में 10th क्लास में आ गए, फिर आप सिक्स क्लास में आ गए. So things doesn't work like this. And but this mistaken ideas we put into our, when it comes to scriptural understanding. हमको लगता है चलो भगवत गीता पढ़ लेते हैं, चलो भागवतम पढ़ लेते हैं, सारे वेद पढ़ लेते हैं, मैं समझ लूंगा. अरे भैया, you are not qualified, you are not intelligent enough to understand the scriptures. First you should accept this. So understanding our inability, that I cannot understand, and then approaching to a right person, authority, not that चलता फिरता कोई स्कूल दिखा जो कि कोई उसमें there is no bona fide school, there is no authority of that school, and just entered and started taking the knowledge. Will you do that?
No, you will search for whether it is authorized by government or not. In the same way, when you take knowledge from somebody about spirituality, about Bhagavad Gita, you should ask the knowledge from where I am taking, whether that person is authorized. He is connected to just like school is connected directly to this government, directly, all the schools. Then only we'll go to that school. Similarly, the person to whom I have accepted and hearing from him about the spiritual subject matter, whether he is connected to the supreme absolute truth. If he is not, then we should not accept. But these things we don't do, then by ourselves we read and get confused and lost. Then we become atheists. And this is what is happening in our Hindu religion. People are not approaching a bona fide guru. They themselves are trying to understand. They themselves are creating their own philosophy. उनको लगता है मैं पढ़ के समझ लूंगा, और फिर पढ़ के कुछ कुछ फिलॉसफी बनाते हैं, कुछ लॉजिक्स डेवलप करते हैं. लॉजिक्स भी डेवलप करेंगे. लॉजिक्स डेवलप करके then they will speak very vehemently, very forcefully that yes, now I have understood. Sakti is supreme. Everything is impersonal. ज्योति है सब परम है, ज्योति में विलीन हो जाना है. So like this, all kinds of philosophy will put. But in order to understand the truth, we have to approach a spiritual master, a bona fide spiritual master, an authorized spiritual master. Then only you can get the correct understanding. Otherwise, will be always confused. यही हो रहा है हमारे हिंदू कल्चर में. कोई अप्रोच नहीं करता स्पिरिचुअल मास्टर को, राइट स्पिरिचुअल मास्टर. सब लोग एक सो कॉल्ड गुरु को जाके अप्रोच करके, गुरु कुछ मैजिकल फेस्ट दिखा दिया, उसने कुछ कुछ आग में एंटर हुआ, डिसअपियर हो गया, तो हमें लगता है ओ ही इज वेरी पावरफुल. अरे ये योगिक प्रोसेस है, आप योगा करो आपको भी आ जाएगा. दैट डज नॉट मीन ही हैज बिकम गुरु. गुरु मीन्स हु इज तत्वदर्शी, हु हैज सीन द ट्रुथ ऑफ लाइफ, who has seen the reality, what is this world all about. And that guru who is not of this world, guru is beyond this material world, he is from the spiritual world, he is a liberated person. When he comes to this world and explains to us, then only we can understand. So we should approach a bona fide spiritual master and hear from him submissively, inquire from him, then only we can understand who is absolute truth. ऐसा नहीं है वेद व्यास ने कंफ्यूजन में डाला. वेद व्यास ने बहुत सिस्टमेटिकली लिखा है, लेकिन जब हम उसको एक राइट पर्सन सुनेंगे तब समझ में आएगा. बहुत सिस्टमेटिक है अपने स्क्रिप्चर्स. शिव पुराण में लॉर्ड शिवा क्यों सुप्रीम बताएगा, उसका एक रीजन है. दुर्गा पुराण में दुर्गा को सुप्रीम क्यों बताएगा, उसका एक रीजन है. विष्णु पुराण में विष्णु को सुप्रीम क्यों बताया, उसका एक रीजन है. क्योंकि बिकॉज हर एक पर्सन की कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग है, तो उस कॉन्शियस पर्सन के लिए वो स्क्रिप्चर बताएगा, उसमें उसके भगवान को सुप्रीम बताएगा. सपोज somebody is very much attached to Lord Shiva and he is worshipping very austere life he is leading with lot of love and devotion, he is offering prayers to. So he will read Shiv Puran, and in that Shiv Puran Shiva is supreme, he is established, so that he may not, his faith may not get shaken up. But when it comes to the essence, Vedanta, after compiling the whole scriptures, Vedavyas gave a Vedanta. Vedanta means where Veda ends. Vedant. He summarized all the scriptures into Vedanta philosophy. And then in Vedanta, he gave 555 sutra formula, concluding all the Vedic literatures. But Vedanta was so very difficult that common people, Kali Yuga people like us, can never understand. So then Narad Muni came to Vedavyas and said, you have given Vedanta by thinking that people will understand what is the truth, but this Vedanta is very tough. You give a commentary on the Vedanta, you explain this Vedanta. Then Vedavyas, because he is the compiler of all the Vedas, so Vedavyas explained the Vedanta Sutra, explaining all the verses in the Vedanta Sutra. And that Veda explanation of Vedanta Sutra, that commentary on the Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is the final work of Vedavyas. Final work. He has concluded everything in Vedanta, and he is now, because Vedanta was very tough to understand, because Vedanta means in the form of formula.
He is not giving the derivation, he is directly giving the formula. That just like Athato Brahma Jigyasa, this is Vedanta Sutra. Janmadiyasya Yatah, this is Vedanta Sutra. Small, small. So like this 555 sutra he gave, that's all. He said now everything is over. But Narad Muni said, because Narad Muni was spiritual master of Ved Vyas, so Ved Vyas unhone bola, this is not the right way to present scriptures. You explain the Vedanta. Then he explained the Vedanta in the form of Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam Mahamuni Krite Kim va Paririshwarah Sadyo Hridhi Avruddhite Atra Shrutbhi Kritbhi Takchanat. So when we hear Srimad Bhagavatam, then everything becomes very clear. So now I will share you that what Srimad Bhagavatam says, because Srimad Bhagavatam is the final work of Ved Vyas. This is very, very important to for all of us, to all the Hindus, so that those who are trying to understand that who is supreme, so much of confusion is there. They should all read Bhagavatam. Bhagavatam, everything is given. And in fact, Bhagavad Gita also, Krishna has everywhere from 5th chapter onwards, 4th chapter onwards, you will start seeing. 4th chapter onwards, Krishna will start speaking about his supremacy. He will say that I am the supreme. And when in the 11th chapter, he will show his Virat universal form, then in that form, he will show that how Lord Shiva, Brahma, all the demigods, 33 crore demigods, they are there in the body of Krishna. They all are coming from Krishna. They are all emanating from Krishna. Krishna, then he will say that I am the supreme. I am the Kalovasmi Lokakshay Krita Pravidho. I am the Kala, the destroyer, the eternal time. I am the controller of this world. Everything is emanating from me. There is no truth superior to me. I am beyond these three modes. I am beyond this material world. I live in another world called the spiritual world, and you all also belong to that world. All the living entity, including Brahma, Shiva, Lakshmi, Durga, they all are my parts and parcels. Krishna said in Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita, you see, Krishna is he is openly revealing his secret about himself that he is supreme. And Bhagavatam, which is explained by Vedavyas, that is final work in Bhagavatam. Everything is given about Krishna only. So this is all about the scriptures and all the acharyas also. You approach Ramanujacharya, Madhvacharya, even Shankaracharya. Shankaracharya is Lord Shiva himself, but he is also saying that Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Moodhamate. You are foolish, you worship Govinda. So Shankaracharya, Ramanujacharya, and Chaitanya Mahaprabhu, our Acharya, six Goswamis, Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, finally Prabhupada, all the Acharyas unanimously saying, Acharya means they are spiritual scientists. So they are saying that Krishna is supreme. Bhagavatam is saying Krishna is supreme. And Krishna Bhagavad Gita mein bol rahe hain ki I am supreme. Supreme means absolute truth. There is no truth superior to me. And all the acharyas are also accepting this. And Brahma has also accepted in Bhagavatam. Bhagavatam is very nice compilation. In Bhagavatam, there are the prayers of Brahmaji, there are the prayers of Lord Shiva, there are the prayers of different demigods. So Indra is accepting that Krishna is supreme. Brahma is accepting that Krishna is supreme. Lord Shiva is accepting that Krishna is supreme. Everybody has accepted Krishna is supreme, but we get confused because we have not approached a right person. We did not inquire from a right guru. We just searched on the internet who is guru, or started hearing on internet, YouTube, and then started developing our own understanding by hearing some third class person who is very. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल ले रहा है, कोई बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल टर्म्स बोलता है तो ही इज गुरु. No, Guru means he should be Tattvadarshi, he should come in Parampara, he should be coming in disciplic succession, he should be representative of Krishna. Then only he can speak about spiritual subject matter. Not that चलता फिरता आदमी सब्जी वाला आज बड़ा बन गया, इंग्लिश बोल सकता है तो आज गुरु बन जाएगा, नहीं. So such kind of people are now cheating the people, and people are innocent. They don't know what is Bhagavad Gita, what is Bhagavatam. उन जाके सुनते हैं, जो बोलता है उसको रट लेते हैं और वही बोलते हैं. उन्होंने कभी इनको, जैसे जाकिर नायक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाकिर नायक लेफ्ट राइट ही मिस इंटरप्रेट्स भगवद गीता, और जाके हिंदू उसको चैलेंज करेंगे, उसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, फिर जाकिर नायक उनको डिफीट करके कुछ कुछ बोल देगा कि आपके स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, एंड देन ही विल से अगर मैं आपको डिफीट कर दूंगा आप मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएंगे. वो बोलेंगे यस,
और चैलेंज होता है, फिर वहां पर वो डिफीट नहीं कर पाते और वो जाकिर नायक उनको डिफीट करके मुस्लिम बना देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। सो दिस हिंदूज आल्सो दे आर कंफ्यूज, कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, कभी अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया, कभी भागवतम पढ़ी नहीं। तो अब जाकिर नायक भी बिविल्डर करता, कंफ्यूज करता। आई हैव सीन मेनी वीडियोज ऑफ हिम, ही इज थर्ड क्लास फेलो, ही डज नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल नॉलेज। भगवत गीता में ही इंटरप्रेट्स वेरी बैडली। 7.20 ही विल ऑफनली कोट, ही विल से तत् ना तत् प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई फॉर्म नहीं है। 7.20 को ऐसा बुरी तरीके से इंटरप्रेट करता है जिसका कि ट्रांसलेशन से और वर्ड से कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसा वो ट्रांसलेट करता है। अ वेरी डिस्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग ही गिव्स। बट हिंदू क्या है, भगवत गीता पढ़ा नहीं, वो जाकिर नायक कुछ भी बोल देगा, अच्छा ये शायद लिखा हुआ बोला हुआ, हाँ ओके, कि सुप्रीम का कोई फॉर्म नहीं है, सुप्रीम तो अल्लाह है, ये है वो है, और इस तरीके से बिल्डर कर देते। सो हमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम किसी को सुनते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें लगता है हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अरे भैया आप पढ़ो पहले, दिमाग लगाओ, एक राइट पर्सन को अप्रोच करके सुनो, एक पर्सन जो कि अथॉरिटी है, जो कि एक ऑथराइज चैनल में आ रहा है, जो कि कनेक्टेड है अथॉरिटी सुप्रीम नॉलेज से, उससे सुनो आप, देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। So I'm sharing here some understanding from Srimad Bhagavatam, how all our acharyas, even Brahma, Shiva, everybody has accepted. So this comes in Bhagavad Gita second chapter verse number 2, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में प्रभुपाद ने भागवतम से दिया है, भागवतम को कोट करते हुए पूरा एक्सप्लेन किया है। 2.2 अगर कोई परपोर्ट पढ़ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि कौन ट्रुथ है। सो आई हैव हाइलाइटेड एवरीथिंग। Truth. So Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Supreme Personality of Godhead कौन है? यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्णा and Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore Lord Krishna is referred as भगवान। जैसे मैंने कल बताया था, जैसे ही कृष्णा भगवद गीता में बोलना शुरू किए तो वेद व्यास जी ने कृष्णा का नाम नहीं लिखा, उन्होंने श्री भगवान लिखा, श्री भगवान उवाचा। उन्होंने वो ये भी लिख सकते थे ना कृष्णा उवाचा, जैसे संजय यहाँ पर बोल रहे हैं तो संजय के लिए उन्होंने लिखा है संजय उवाचा, क्योंकि संजय सुप्रीम नहीं है, संजय भगवान नहीं, इसलिए उनको भगवान नहीं बोला। लेकिन जैसे ही कृष्णा बोलना शुरू किए तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया श्री भगवान उवाचा। जैसी पहले ही श्लोक में जैसे भगवान ने बोलना शुरू किया, वेद व्यास ने क्लियर कर दिया, लेकिन क्या हम समझ नहीं पाते? तो प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया परपोर्ट में, गिविंग ऑल द रेफरेंसेस फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम। So therefore Lord Krishna is referred as भगवान throughout the Bhagavad Gita। पूरे भगवद गीता में कृष्णा को भगवान बताया गया है। तो भगवान क्या है, भगवान मतलब क्या है, अब इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। भगवान इज द अल्टीमेट इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी तो अभी फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान इज द अल्टीमेट इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ का टर्म आ गया। अभी एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, अब देखो थोड़ा सा आप 10 मिनट को आपको पेशेंटली हियर करना पड़ेगा, then everything will become very clear. Absolute truth is realized in 3 phases of understanding, namely Brahman or the impersonal all-pervasive spirit, Paramatma or the localized aspect of the supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan, यहाँ भगवान आता है, और the supreme personality of Godhead Lord Krishna. So यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग आता है एब्सोल्यूट ट्रूथ का। And absolute truth has 3 different phases of understanding, 3 aspects of absolute truth. Any truth has 3 aspects. Just like according to me, if you see about the truth about me, so when it comes to the existence of mind, then anything about me has 3 phases of understanding. First understanding is Brahman, second is localized called Paramatma, third is Bhagwan. These 3 phases of understanding of absolute truth. Brahman means energy, Paramatma means localized aspect, and Bhagwan means supreme personality. So absolute truth के 3 फेज हैं। इसी तरीके से हर एक ट्रूथ के 3 फेज होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ अबाउट मी, सो मेरे ट्रूथ में भी 3 फेजेस हैं। कैसे? So when I put message on the group that today at 9 PM there will be class and we are going to discuss these topics, उसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे, एंड ये आप अटेंड करो तो यू विल गेट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज किया, लिंक शेयर किया, तो आपने मैसेज देखा तो व्हाट डिड यू फील?
व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रभु जी ने मैसेज किया है ना. सो मैसेज, दैट मैसेज इज नॉट मी, मैं मैसेज नहीं हूं, बट माई सीइंग द माई मैसेज व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, यू विल डायरेक्टली थिंक ऑफ मी कि प्रभु ने मैसेज किया है और ये आज डिस्कशन होने वाला है. So that is called energy form, energy presence of mind. I am not present in your message, that message which you are seeing. I am not that. That is my message, because I have composed, my energy is there, that is my energy. So when I send that message, you think that that is me, but that is my energy. So that is called Brahman understanding about me. You have not seen, suppose there are many students, they are not attending the classes, but hearing, they are they are seeing all the messages in the group. So they have not seen yet to, they have not yet seen to me, because they have not attended the classes. So for them, I am that message only. I means that message, because they have never attended my class. So now those, after reading the message, those who are regular students, regularly coming, so वो क्लिक लिंक को क्लिक करेंगे, 9 बजेगा जैसे ही वो क्लास में आएंगे, एंड दे विल बी एबल टू सी मी. अच्छा ये प्रभु जी आज क्लास लेंगे, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सपोज. अच्छा ये प्रभु जी आज भगवद गीता एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड सेकंड अंडरस्टैंडिंग, कॉल्ड लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग. और इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ के टर्म में बात करें तो परमात्मा अंडरस्टैंडिंग. लोक परमात्मा मीन्स लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस एब्सोल्यूट ट्रुथ. So this understanding is also not complete. Just like that, energy understanding is not complete, because that by seeing that message, you cannot understand me, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ. You cannot have complete knowledge about me. That is energy understanding, or Brahman. In technical term, it is called Brahman understanding. Second is localized understanding. Just like you are now seeing me, that I am, my appearance is like this, my voice is like this, my gestures are like that, I speak like this. So all this understanding you are getting about me, but that understanding is also not complete understanding, because you are seeing me on your mobile phone screen, and my look, I am present in all of your mobile phone, and you all are seeing me. So that is my localized. I am sitting here in Jaipur, I am not sitting in your mobile phone, but it appears that I am there in all of your screens. So this is called localized. I am localized in the screen of yours, you can see me, but actually I am not present there. But that understanding, some understanding, some higher understanding you got, more than energy understanding. अच्छा प्रभु जी ऐसे हैं, प्रभु जी का ये अपीयरेंस है, हम मैं कहीं दिखूंगा तो आप मुझे पहचान लेंगे. But actually that is not again complete understanding. How you will get the complete understanding? When you come to Jaipur and meet me personally, you have discussion, then you will see, अच्छा प्रभु का ये पर्सनालिटी है, प्रभु ऐसे रहते हैं, प्रभु का ये लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है. हियर प्रभु लिव्स, अच्छा इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, कृष्ण बलराम है, बहुत सारे लोग आते हैं, प्रभु अकेले ही नहीं है, यहाँ पर मैं मोबाइल में अकेला ही दिखता हूँ. तो कोई ये भी सोच सकता है कि प्रभु अकेले ही रहते हैं. नहीं, by localized aspect somebody can conclude कि Prabhu is living alone. But when you come to here in Jaipur, then you understand, oh, Prabhu is not alone. Thousands and thousands of people here coming, they are coming, and Prabhu is living. So many devotees here. Krishna Balram is there. So many devotees are there. और पूरा जयपुर है इतना बड़ा, इस तरीके से then you will get the complete understanding about me. So these are the three aspects of any truth. कोई भी truth हो, just like you are college students. So जैसे कॉलेज है, कोई कॉलेज, तो आप कॉलेज जाने से पहले आप पहले यूट्यूब पे चेक करते हैं, अच्छा कॉलेज क्या है, व्हाट इज दिस. यू फर्स्ट हियर अबाउट दैट कॉलेज, कॉलेज बहुत अच्छा है, ये आईआईटी है, ये इतना बड़ा कैंपस है, ये है डायरेक्टर, ये है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, all those things, and you then watch videos. So that is energy understanding or Brahman understanding about the truth about college. Then now after getting into the college, you have reached to a station, जंक्शन पहुंचने के बाद दूर से गाड़ी में बैठ के जैसे आप कॉलेज तरफ जा रहे हैं, फिर आप दूर से देखते हैं, अच्छा ये कॉलेज है मेरा, इतना बड़ा, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, बाजार मार्केट है, यहाँ पर इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ है. So that is now localized understanding, second phase of understanding of that college. Now when you enter the college and you start living there and you explore everything, then you get even more deeper understanding about the college कि अच्छा ये डिपार्टमेंट यहाँ पर है, वो डिपार्टमेंट वहां पर है, ये सारे स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट के, इतने सारे फैकल्टीज हैं, वो डायरेक्टर हैं. You get the complete detailed understanding about the college. So that is called Bhagwan understanding. So like this, every truth has three phases of understanding. In the same way, this was the example I gave. In the same way, absolute truth has also three phases of understanding. The first phase is Brahman, that he is energy.
Yes, his energy, but not that he is only energy. He is energy, he is beyond energy, he is Paramatma also, and he is Bhagwan also. Bhagwan means complete understanding about the absolute truth. So absolute truth has got three different levels of understanding, but unfortunately people many times they get stuck into first level of understanding, Brahman understanding, कि यही है absolute truth. No, higher understanding भी absolute truth का, और आगे जाओ, देन कम्स टू परमात्मा. कुछ को लगता है, सो जो माया, जो ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं, उनको लगता है एनर्जी सुप्रीम. वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग दैट इन एनर्जी सुप्रीम. यस, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली. सो एनर्जी इज कृष्णा इन वन सेंस, but krishna and energy is different. Krishna is Krishna personality, his energies are energy, just like this air, water, fire, these are the energies of Krishna. So in one sense it is not different from Krishna, but at the same time this is different from Krishna. Just like suppose if I off my video, I only speak, so you will hear my voice is an energy. So my voice is not different from me, but I'm not the voice. In the same way, Krishna's energies are Krishna also, not Krishna also, because Krishna is personality and this energy is coming from Krishna, so in one sense that is Krishna also. But these Brahma Kumaris, so many Mayavadis, they think that absolute truth is impersonal. So many Mayavadi schools are there. In that, Mayavadi is not materialism. Materialism is different. Mayavadi is different. Mayavadi means they follow spirituality, but they think that absolute truth is impersonal. So ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, शक्ति है सुप्रीम है, एनर्जी सुप्रीम है, ब्रह्मन है सुप्रीम, उसमें मर्ज होना. नो, दिस इज द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ. उससे भी ऊपर है. अब कुछ लोग योगिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, मिस्टिक योगा प्रोसेस, उनको लगता है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इन आवर हार्ट, परमात्मा यही सुप्रीम है. नो, ये भी एक हायर अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मन से, लेकिन ये भी सुप्रीम नहीं. तो क्या सुप्रीम है? हायर भगवान अंडरस्टैंडिंग मीन्स absolute truth का एक complete understanding है that he is a person and he has so many devotees living with him. He is having life, his own life. He performs the activities. He is very very attractive personality. He also dances. He also eats. He also walks. It is not that he is energy और उनका कोई form नहीं, उनका कोई रूप नहीं है. बिल्कुल गलत है. So these are the three phases of understanding of absolute truth, and this is given in Srimad Bhagavatam here. So I hope you have now understood about absolute truth. So here in Bhagavatam, Vedavyas is writing that there are three phases of understanding. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. तीनों एक ही हैं, तीनों कृष्णा हैं. जैसे मेरा मैसेज ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, मैंने किया है, कोई थर्ड पर्सन ने नहीं किया, सेकंड पर्सन नहीं किया, मैंने किया है. कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं. आपको लग रहा है यही मैसेज प्रभु है. नहीं, मैं अलग हूँ भैया, मैं मैसेज से भी हायर हूँ. सो हूं तो मैं ही, आप नॉलेज तो मेरे बारे में ही ले रहे हो, मैसेज तो मैं ही शेयर कर रहा हूँ, लेकिन दैट नॉलेज इज नॉट कंप्लीट नॉलेज. सो सच फेजेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर एक्सप्रेस ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. सो इसको प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, दैट इज सन, सन डिस्क एंड सन प्लैनेट. सन साइन है, कोई सन साइन को देख के ये कंक्लूड कर सकता है कि यही सन है. जैसे आप रूम में बैठे हो, सन साइन आया आपके रूम में, देन यू से ओ सन हैज कम. Sun actually has not come. Sunshine is coming in your room, so therefore you are saying sun is coming. Sun is there in the sky. So by seeing the sunshine, you are saying that sun has come. But actually, sunshine is not the sun. So first understanding is sunshine. Then you come out and see the sun disk. तो आपको दिखेगा सन तो एकदम डिस्कस है, छोटा सा है, एक प्लेट के जैसा है ना. दैट इज सेकंड अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. उससे भी हायर अंडरस्टैंडिंग क्या है? सन एक पूरा पूरा प्लैनेट है, वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर उनकी बॉडी फायरी बॉडी है, वहां के जो राजा हैं उन विवस्वान है, एंड ही इज द प्रिडोमिनेटिंग डिटी ऑफ दैट प्लेस. पीपल हु लिव देयर इन सन प्लैनेट. सो ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग यू गेट when you go to the sunshine, sun planet. So these are three different understanding. This analogy is given to make us understand. Okay. So now फिर प्रभुपाद भगवान वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान वर्ड जो है क्या होता है. भगवान मीन्स जिसके पास 6 ऑपुलेंस हैं. वन हु possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation is called भगवान. So भगवान मीन्स जो सबसे सुंदर हो, सबसे धनी हो, सबसे पावरफुल हो, सबसे ज्यादा फेमस हो, सारा नॉलेज हो, वो भगवान है. सो
we see all these qualities in Krishna, therefore Krishna is supreme. और ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं आप, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस भी दिए हैं. So यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity including Brahma, Lord Shiva or Narayana can possess opulence as fully as Krishna. यहाँ प्रभुपाद ने नारायण भी बोला है, तो नारायण और कृष्ण के अलग अलग हैं, ये भी हम समझेंगे आज की क्लास में नहीं, बाद में. Therefore it is concluded ब्रह्म संहिता जो कि ब्रह्मा के प्रेयर्स हैं, ब्रह्मा जी ने ऑफर किए हैं, उसमें ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम. There are many personalities possessing the quality of Bhagavan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is primeval Lord Govinda and the cause of all causes. He is the cause of all causes. This is the prayer offered by Brahma ji. Now in Bhagavatam also Ved Vyas, after describing all the incarnation, Bhagavatam में उन्होंने सारे incarnation describe किए, तो उसके बाद उन्होंने क्या conclude किया? Bhagavatam also there is a list of many incarnation of the supreme personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnations and personalities of Godhead expand. तो उन्होंने ये श्लोक बोला, एते चाम स्कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम से आती है. So therefore Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both super soul and impersonal Brahman. So इसलिए शिवा ने बोला, ब्रह्मा ने बोला, वेद व्यास ने भी बोला, अब भगवद गीता में अर्जुन भी बोलेंगे, नारद मुनि ने भी बोला, शंकराचार्य ने बोला, सब बोल रहे हैं यूनानिमसली कृष्णा इज सुप्रीम. लेकिन हमें समझ नहीं आता, हम बेविल्डर रहते हैं, क्योंकि हमने इन सारी अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं किया. हम कोई थर्ड पर्सन जो सड़क छाप है, सब्जी बेचने वाला और आज इंग्लिश बोलने लग गया, तो उससे हम सुन के वो थोड़ा भाषण देने लग गया भगवद गीता के बारे में, तो हमें लगता है वो स्पिरिचुअलिस्ट है. उसका हमने बैकग्राउंड नहीं देखा कि वो कितने स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करता है, उसके क्वालिटीज क्या हैं. सारे बैड क्वालिटीज इंडल्ज है, लेकिन जैसे स्टेज पे आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो हमें लगता है वो बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट है और वो जो बोला सही बोल रहा है. तो हमने गलत स्टेप लिया. वेद व्यास जी ने गलत नहीं किया, हमने गलत स्टेप लिया है समझने के लिए. ओके, सो इस तरीके से प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ कृष्णा इज सुप्रीम. ओके, नाउ आई विल शेयर वन स्मॉल क्लिप वीडियो, 3 to 4 minutes, which is very nice, so all of you can watch this, then we'll wind up. Sorry for expanding the class timing, but these are all important for all of us to understand, otherwise we'll be always confused कि भैया सुप्रीम कौन है ना, and then we'll be always getting defeated by so many other people. हे भगवान, ऐसा क्या हो गया? वृंदावन चलकर पता किया. हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा? पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया. वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है. ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था, तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ. ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया?
क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखें। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। So we saw that how Brahma also got bewildered. He could not understand the supreme position of Krishna. Who is Krishna? So we also cannot understand. But when we follow the instructions of the authorities, we hear from them, then we understand that how Krishna is Supreme Lord. And in this video, आपने ये भी देखा कि Krishna was standing and there were so many Vishnus. So as many times we have seen, no, कि Vishnu is coming from Krishna. So here that understanding also becomes clear that how all this, there is not only one Vishnu, there are so many Vishnus. There are unlimited Vishnu. So all these Vishnus are there in different, all the Brahmanda, just like unlimited Brahmandas are there, in the same way unlimited, in all the Brahmandas, Vishnus are there. So like that unlimited Vishnu are there. So all the Vishnu are coming from Krishna. They are expansions of Krishna. So in this way we understand the position of Vishnu and Krishna. Vishnu is coming from Krishna. Krishna is there in the spiritual world and Vishnu is there in the material world. But when Krishna comes in this material world, he comes through Vishnu. So हमें लगता है कि कृष्णा विष्णु के अवतार हैं. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। विष्णु जो है कृष्ण के एक्सपेंशन है, जो कि हमने इस वीडियो में समझा। कृष्णा इज नॉट द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कृष्णा से विष्णु आए हैं। कृष्णा के एक्सपेंशन है विष्णु, और विष्णु मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं सारे ब्रह्मांड में। और कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान अपने धाम में, गोलोक धाम में, ही इज एंगेज्ड इन द पास टाइम विद हिज डिवोटीज ओवर देयर, एंड एट टाइम्स ही कम्स हियर, डिसेंड्स हियर, ही परफॉर्म्स पास टाइम ओवर हियर आल्सो। तो ये पास टाइम वृंदावन में भगवान ने किया था, जहाँ ब्रह्मा भी बिविल्डर हो गए थे, कंफ्यूज हो गए कि ये कृष्णा कौन है।
फिर कृष्णा ने ये लीला रची और उनको बताया कि विष्णु, जिनको ब्रह्मा जी तुम अपना भगवान समझते हो, वो विष्णु भी मेरे एक्सपेंशन है, मेरे से आए हैं। तो फिर विष्णु ब्रह्मा जी एकदम डर जाते हैं, बेबिल्डर हो जाते हैं। फिर वो दंडवत प्रणाम करने लगते हैं कि अच्छा भगवान, मैं इसी इस बाल स्वरूप का हमेशा दर्शन करूंगा। सो इस तरीके से सारे डेमी गॉड्स जो एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा ही सुप्रीम है। इस तरीके से इंद्र का भी एक लीला आता है, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, इंद्र ने भी सोचा कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, ये कृष्णा कौन होता है। तो फिर कृष्णा ने ऐसी लीला रची कि इंद्र भी बेविल्डर हो गया, गोवर्धन ही उठा लिया भगवान ने। सो बाय दिस कृष्णा हैज परफॉर्म मेनी मेनी लीलाज, और उन्होंने दिखाया कि कैसे मैं ही सुप्रीम हूँ, आप सब लोग सुप्रीम नहीं। So I hope this is very very clear to all of us. Should not be now into confusion that Krishna supreme नहीं है, Shiva है, Brahma है, कौन है। So all the authorities are saying, scriptures are saying, and all these demigods are also saying that Krishna is the only supreme. So we should worship Krishna by chanting Hare Krishna Maha Mantra, and then we can understand about Krishna, that how we also are belonging, we belong to Krishna. We are of Krishna, and purpose of life is to understand Krishna and go to Krishna and enjoy with Krishna in the spiritual world eternally. That is the purpose of life. That is what our intrinsic desires are also there. We desire to be eternal, but here in this material world we cannot be eternal. By chanting Hare Krishna mantra regularly, we develop bhakti to Krishna, and finally we get transferred to the spiritual world and enjoy with Krishna there in the spiritual world eternally. So I hope now this understanding is very very clear to all of us, which is very very controversial in our culture. कौन सुप्रीम कौन नहीं है, आप समझिए और इसको दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को एक्सप्लेन करिए। और अगर आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप क्लासेस में बुलाइए एंड डिवोटी से मिलाइए, उनको प्रभुपाद के बुक्स पढ़ाइए। प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बिकॉज प्रभुपाद इज द करेक्ट पर्सनालिटी, राइट पर्सनालिटी हु कैन मेक अस अंडरस्टैंड करेक्टली। All others are cheating us because they are not referring scriptures. Prabhupada is in parampara and he always speaks from the scriptures. Okay, with this we'll stop. Thank you very much. आज पूरा 1 घंटा हमने ले लिया because topic is very very important. Hare Krishna. Thank you very much.